15 ઓગસ્ટ 1947 ભારત દેશને આઝાદી મળી હતી. આજે સ્વતંત્રતા પર્વની સમગ્ર દેશભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી લાલ કિલ્લા પરથી એક ભાષણ પણ કર્યું હતું. ત્યારે જ આજે જ્યારે રાષ્ટ્રીય તહેવારની સમગ્ર દેશભરમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે સવારથી જ અલગ અલગ સરકારી કચેરીમાં ધ્વજવંદનના પણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે 79માં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી દેશભરમાં થઈ રહી છે. ત્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં આવેલા નાંદેજ બારજડી રેલવે સ્ટેશન ખાતે પણ રેલવે સ્ટેશનના કર્મચારીઓ તેમજ રેલવે સ્ટેશનના માસ્ટર દ્વારા આજે ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સવારથી જ લોકો ઉત્સાહભેર આજે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. સવારના સમયે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ જનગણ મન રાષ્ટ્રીય ગીત ગાઈને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ કર્યો, તિરંગાને સલામી આપવામાં આવી. તેમજ ત્યાં હાજર જે રેલવે સ્ટેશન માસ્ટર છે તેમણે લોકોને સંબોધ્યું પણ હતું. દેશની એકતા અખંડિતતા જળવાઈ રહે અને દેશ માટે આપણે શું બલિદાન આપી શકીએ, દેશમાં રહીને દેશને શું આપી શકીએ તે માટેની વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી. સાથે જ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો પણ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. નાંદેજ બારજડી રેલવે સ્ટેશન પર આજે જે ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ હતો તેમાં લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો ને આ કાર્યક્રમને આજે 15મી ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के अवसर पर पश्चिम रेलवे की ओर से मैं आप सभी पैसेंजरों, गांव वाले, रिटायर कर्मचारी और जो वर्तमान कर्मचारी है उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं. स्वतंत्रता के दिवस पर आज़ादी ऐसे अपने को मिली नहीं है. भारत के कई वीर सपूतों ने अपना जान गंवाया, तब जाके आज़ादी मिली है. आज़ादी का जतन करना हम सभी का कर्तव्य है. आज़ादी मतलब जिम्मेदारी. जिम्मेदारी मतलब सबका अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिले, कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान एएमसीए के 12,500 लोगों का है. हमने पूरे 10 साल में, पिछले 10 साल में 3,000 लगभग 68 करोड़ रुपए हमने एएमसीए के किस लिए खर्च किए हैं, तो हमारे देश के या हमारे केवल अहमदाबाद शहर जो केवल 1 लाख लोगों में आता है, हमने उस पर खर्च किए. हमने केवल 1044 करोड़ रुपए इसलिए खर्च किए ताकि आपके फेंके हुए कचरे हम ठीक से उठा सके. डोर टू डोर कैंपेन चलाए और इस 3,000 करोड़ 1044 करोड़ के बाद हम आज क्लीनेस्ट सिटी पर पहुंचे हैं. तो मैं ये केवल शुभकामनाएं केवल उन लोगों को देना चाहूंगी जिन्होंने इसमें सबसे ज्यादा योगदान किया है. अगर मैं बात करूं कि भारत 2047 तक कैसे विकसित भारत बन सकता है, तो आज हमारे जो वुमेन पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ में आधी मतलब 50% या 49.5% तो है ही. लेकिन अगर आप देखें तो इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका कितना योगदान है, तो 32.8 यानी 32.8%. जबकि हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है जो आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में आते हैं और हमारी इकोनॉमी टॉप 4 में है, हमारा चौथा नंबर है, लेकिन उनकी जो भागीदारी है वो अगर चाइना में देखें तो 60.8%, अगर अमेरिका में देखते हैं तो 56.8% और अगर जापान में देखते हैं तो 53%. यानी हमारी वुमेन्स केवल हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाकर घर में बिठा दो. काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में जब तक हम महिलाओं की 50% जितनी पॉपुलेशन है उतनी भागीदारी या उससे कम ज्यादा भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास या 2047 तक विकसित भारत का सपना नहीं पूरा होगा. केवल नीति बनाना, 2047 तक बातें करना, हमारे प्रधानमंत्री का 18 घंटे काम करना, एएमसी का इतना काम करना, गुजरात गवर्नमेंट का इतना काम करना, देश के 28 राज्यों का इतना काम करना, केवल ये लाजमी नहीं है. हम देश के नागरिक के नीति बनाना, नीति को फॉलो करना, ये सपना देखना केवल सरकार की या एएमसीए की या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है. ये हमारे हर देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है. अगर मैं बताऊं कि 2047 तक और हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो हम एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं, तो मैं इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया. દર્શક મિત્રો, એનકવરેજ ન્યૂઝને આપ લાઇક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.